Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session, and we are going to continue our chapter that we were doing previously, and we were doing internet communications, bacho. So let me give you a quick recap that what we have done in our last session. We were talking about how data is being transmitted over the internet. We talked about the protocols. We talked about the models that currently in the world we are having two models. We are further going to talk about OSI model today. आज कुछ और further बातें करेंगे about the OSI model as well. Then we talk about the TCP. I told you that in your syllabus, TCP IP model is being included. Then we have seen that how data is being transmitted using the layering concept, and then we have seen the definitions of the layer TCP IP protocol model. We have seen why layering concept is being applied, points to remember about the layering approach, and we have also seen that whenever we are transmitting data, what are the things that are necessary whenever we are transmitting the data. Then after that, we have seen the application layer functionality of the application layer. Now, in today's session, first, we are going to complete all the functionality of the remaining layers, like we are having transport layer, we are having internet layer, or we call it network layer as well sometimes. And then we are going to see the data link layer or network access layer. So we can use multiple names for that as well. So we are going to talk about that. Further, after that, we are going to start off with the protocols that are used on each layer. Like on application layer, you can see there are multiple protocols like HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, and more. So we are going to see each protocol one by one in today's session. So without wasting any time, let's start off with the transport layer first. Let's talk about the transport layer. Okay, when we talk about the transport layer, the main function of this layer, is it establish end-to-end connection between sender and receiver. So this is the main function of transport layer, बच्चों, कि end-to-end connection establish करवाती है layer आपके पास. There are further more functions, but this is the main function of this layer, end-to-end connection establishment. After that, order and assemble data packets as well. So packets को assemble करना, एक order में लाना. So this is also the function of the transport layer. Now, you guys must be wondering what are packets. So in the world of internet, we always call data as packets, बच्चों. We are going to call data as packets. अब packets, it's actually a short form of data. लेकिन एक पैकेट क्या क्या कंटेन करता है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए. So let me draw a small packet in front of you. मैंने एक पैकेट की छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने जरूर ड्रॉ करूंगा. पैकेट. So when we talk about the packet, so packet consists of checksum byte, further packet having DIP. DIP is actually the destination IP.
Further, packet is also having SIP, that is of course the source IP address. And at last, the packet is having another stuff that is called PSN. PSN is actually packet sequence number. Every packet is being assigned a number. हर packet के पास एक number होता है, that is called the sequence number of the packet. So this is called packet sequence number. Sometimes we call packet sequence number as packet header number as well. So both are same stuff. So ये एक छोटा सा पैकेट मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ करा है. सो डाटा को एक्चुअली इंटरनेट की दुनिया के अंदर वी कॉल इट अ पैकेट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर एलिमेंट्स लाइक चेकसम बाइट, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी एंड पैकेट सीक्वेंस नंबर. सो अरेंजिंग, ऑर्डर में लाना, असेंबल करना डाटा पैकेट्स को, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर. फर्दर this layer makes sure that connections are reliable. Further, encryption is also applied. Encryption, I hope you guys have studied in your O levels, sending the data in the coded form. So encryption is also applied on this layer. Further, this layer makes sure that the data is error free. Further, flow of data is also controlled by this layer. Flow of data and verification of data is also applied on this layer. And of course, the protocols that are running on this layer, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. Protocols used by transport layer are UDP and of course TCP. So these are the 2 protocols that are generally used by the transport layer, and you should know about these protocols as well. So this is the major function of बच्चों transport layer के end-to-end connection establish करना between the sender and the receiver, order and assemble the data packets, make sure that the connection is reliable. Encryption is also applied on this layer. Error free आपके data को बनाया जाता है, flow control check किया जाता है, and protocol that are being used, it's either TCP or we use UDP on this layer. And we have also seen the packet. हम लोगों ने packet के बारे में भी यहाँ पे देखा. Packet is what we call data on internet. इंटरनेट में डाटा को हम लोग पैकेट कहते हैं जनरली, एंड इट कंसिस्ट ऑफ जनरल बेसिक एलिमेंट्स. इसके क्या होते हैं आपके पास? चेकसम बाइट, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी एंड पैकेट सीक्वेंस नंबर. आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू राइट ऑन मैक चैट, एंड वी हैव वन क्वेश्चन ऑन द मैक चैट. सर, व्हाट इज एसआईपी स्टैंड्स फॉर? एंड अरीशा, आई थिंक आपने पहले क्वेश्चन किया होगा. सो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस स्टफ. ठीक है, सोर्स आईपी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे. अब देखिए, I talked about the OSI model first. I told you that currently दुनिया में जो मॉडल अप्लाई किया जाता है, अभी OSI मॉडल यूज होता है. तो ये OSI मॉडल के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. एक्चुअली OSI मॉडल की नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू द TCP IP मॉडल. तो ये दोनों को पैरेलल मॉडल में अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड यू शुड नो अबाउट द नेमिंग कन्वेंशन एज वेल. सो मैंने पैरेलल के अंदर दोनों मॉडल्स आप लोग के लिए ड्रॉ कर दिए. नाउ लेट्स से दिस इज योर OSI मॉडल.
OSI वैसे just for the sake of information, open system interconnection network, and this is your TCP IP model. ये दोनों को मैं ट्रेस इसलिए करवा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ द नेमिंग कन्वेंशन, कि आप लोग जनरली कभी कभार क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेमिंग कन्वेंशन। कभी एग्जामिनर कुछ बोल रहा होता है, कभी कुछ बोलता है सर, कभी इंटरनेट लेयर को नेटवर्क लेयर बोलता है, कभी नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बोलता है, कभी डाटा लिंक लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलता है, एंड सो ऑन। तो ये नेमिंग कन्वेंशन आप लोगों को बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेमिंग कन्वेंशन इन ओएसआई मॉडल एंड व्हाट इज द नेमिंग कन्वेंशन इन टीसीपी आईपी मॉडल. So in TCP IP model, the first layer is called the application layer, and you all know कि यहाँ पे भी आपके पास application layer को हम लोग application layer ही कहते हैं. So this is the first layer that is called application layer. इसके बाद आपके पास एक और लेयर आती है, that is called presentation layer. इसके बाद आपके पास एक और लेयर आती है, that is called the session layer. अब इन तीनों लेयर्स को टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर एक ही लेयर के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं, एंड वी कॉल दैट लेयर एज एप्लीकेशन लेयर. सो ओएसआई में क्या किया गया है, ओएसआई में फर्दर एप्लीकेशन लेयर को फर्दर ब्रेक डाउन करके प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर में ब्रेक डाउन कर दिया गया है. करंटली ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स एंड टीसीपी आईपी मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स. लेकिन अब ओएसआई मॉडल को फर्दर रीडिफाइन किया जा रहा है और अब करंटली वर्किंग चल रही है. आप लोगों ने नाम सुना ही होगा इन योर ओ लेवल्स एज वेल, टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. Transport layer security. So they are introducing TLS as a separate entity, as a separate layer now. But that is currently working, अभी चल रही है. अभी तक जो मॉडल यूज हो रहा है उसके अंदर 7 लेयर्स ही है, लेकिन कुछ दिनों में, आने वाले दिनों के अंदर आपके पास OSI मॉडल विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 9 लेयर्स. फर्दर जितना ज्यादा उसको डिवाइड करेंगे, जितना ज्यादा उसको एक्सपेंड करेंगे, जितना ज्यादा आपके पास मॉड्यूलर अप्रोच को अप्लाई किया जाएगा, उतना आसान होगा आपके पास अपडेशन एंड ऑल दैट, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट. सो हर चीज आपके पास आसानी के लिए की जा रही है. Then after that you are having the transport layer. So transport layer को transport layer ही क्या बोला जाता है at both ends. और यहाँ पे भी आपके पास we call it transport layer, same. After this, in OSI model, we call the layer as network layer. We call this layer as network layer. And TCP/IP मॉडल के अंदर we call it इंटरनेट लेयर. इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट लेयर कहते हैं. अच्छा, एग्जाम में एग्जामिनर कभी कभार इंटरनेट लेयर को नेटवर्क लेयर भी बोल रहा होता है, एंड ही इज यूजिंग वाइस वर्सा, दोनों नाम यूज कर रहा होता है. तो आपको बच्चों दोनों पता होने चाहिए, ठीक है, आपको दोनों पता होने चाहिए. सो इंटरनेट लेयर भी कहते हैं, से हम नेटवर्क लेयर भी कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट लेयर इज in TCP/IP model we call it data link layer, or in OSI model we call it as data link layer, and in TCP/IP model we call this as network access layer. ठीक है. सो ये नेमिंग कन्वेंशन है बस आपके पास एक,
जो आप लोग को पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट लेयर्स आर फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे भी आपके पास फिजिकल लेयर होती है और यहाँ पे भी आपके पास यू आर हैविंग योर फिजिकल लेयर एज इट इज। सो ये नेमिंग कन्वेंशन आप लोग को बच्चों पता होना चाहिए। जनरली आपका एग्जामिनर वाइस वर्सा यूज कर रहा होता है, कभी कभार टर्म्स अलग यूज कर सकता है वो, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस एज वेल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, और आई थिंक वी आर गुड, नो क्वेश्चंस एट ऑल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स सी, हमने यहाँ पे बात करी अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर, we talked about the packet as well, we talked about the naming convention that is used in OSI model and TCP IP model. Now let's move forward, let's talk about the internet layer now. So when we talk about the internet layer, there are multiple functions of the internet layer. Internet layer के यहाँ पे हमारे पास multiple functions हैं. So let's see. Internet layer, and when we talk about the internet layer, the main role of the transport layer was to establish end-to-end connection. Similarly, the main role of internet layer is routing the data to correct destination. This is the main role of internet layer, that the data should be routed, routing the data to correct destination. ठीक है, further confirms individual systems over internet by their public IP provided by ISP. ठीक है, further you should know this layer communicates with network access layer. Further you should know this layer works on IP address. Further you should know about this layer. अच्छा, ये आपको कहीं पे भी बेटा इस तरह ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? So these lectures are very important for the understanding purpose, for the concept purpose, and of course for the noting purpose as well. कि आपके पास ये notes available होने चाहिए. And further you should know the last point of this layer is router. आपको पता है it's a device. So router is actually internet layer device. तो राउटर भी आपके पास इस लेयर के ऊपर काम करता है बच्चों. So these are the points that you should remember about the internet layer. Or I think we are good. So if you have any questions, feel free to write on Mac chat, bachcho. Else we are going to start the last layer, that is called the network access layer, or we call it data link layer as well in OSI model. So either you can call it network access layer, or you can call it data link layer as well. So when we talk about the network access layer, main role of this layer is this layer actually communicates with
hardware. Further, switch, yeah, what we call a bridge as well, is this layer device. Further, mapping of IP address on MAC address take place on this layer, and it's a type of netting. नेटिंग आप लोग को अगर याद हो, I taught you in your AS level netting, network address translation. So mapping of IP address on MAC address, आप अपने IP एड्रेस को MAC एड्रेस के ऊपर प्लेस करते हैं, मैप करेंगे. ये कहां पे करते हैं? इस लेयर के ऊपर परफॉर्म करेंगे. इस फिनोमेना को हम लोग कहते क्या है कि IP एड्रेस को MAC एड्रेस के ऊपर प्लेस करने के फिनोमेना को हम लोग कहते क्या है? We call it as netting बच्चों. So this is called netting, and netting takes place at network access layer. Further, इस लेयर के और भी काम है आपके पास. This layer also defines how data should be sent physically through the network. So this is also the functionality of this layer over here. ठीक है. So ये हमने यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी देखी ऑफ नेटवर्क एक्सेस लेयर, और वी कॉल इट डाटा लिंक लेयर. We have completed all the layers, starting off with the application layer, then transport layer, then internet layer, then network access layer, or we call it data link layer as well. और हमने यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन देखा कि how the naming convention takes place in OSI model and in TCP IP model. After that, we have also looked at the packet, and अब देखिए, generally we call data as packets in the world of internet. ठीक है. लेकिन कभी कभार कुछ लेयर्स के ऊपर हम लोग कुछ और टर्म्स भी यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी आप लोग को टर्म्स पता होने चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, डाटा लिंक लेयर के ऊपर या नेटवर्क एक्सेस लेयर के ऊपर वी कॉल द डाटा एज, data is called as frames. At the internet layer, data is generally called as datagrams. And on on transport layer, we call data as segments. So we have different terms for the data. Segment भी हो, datagram भी हो, frames भी हो. So सबका मतलब यही होता है कि we are talking about the data. So ये different terms हैं आपके पास, ये आप लोगों को पता होने चाहिए. Different layers के ऊपर हम लोग different terms use करते हैं, तो ये basic पता होनी चाहिए. Now we are having few questions over here. Let's see. Okay, the first question is from Zen. Sir, in layers के protocol भी discuss होंगे. Of course, Zen, we are going to kick off with the protocols after this, after the functionalities of the layers. Sir, 1 second ऊपर जाएं. Need to copy the last point. आसान for sure. ऐसे करता हूँ कि सारे पॉइंट्स हमारे सामने आ जाए. ठीक है. A perfect
बिल्कुल बेहतरीन सारे पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं. यू कैन कॉपी whatever the point you want to copy. Okay, now let's see. यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है बेटा, feel free to ask, else we are going to move forward. आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग. ग्रुप 1 में तो बहुत सवाल आए थे. खैर यहाँ पे कोई एज सच सवाल नहीं आ रहे, लेकिन अगेन देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क. कोई भी आपके ध्यान में क्वेश्चन आ रहा हो, सो यू कैन राइट डाउन ऑन बैक चैट बच्चों. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. सर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है? अच्छा जी, देखो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें ना यहाँ पे, सो जैन, ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ, जब मैं पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, दिस इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर. दिस मॉडल is implemented using software. मतलब ये सॉफ्टवेयर ही है आपके पास. TCP IP model is the software that is being implemented. These are the protocols, and protocols are what set of rules and certificates. And how these protocols are implemented? These protocols are implemented using the software. And TCP IP is actually, TCP IP model is actually a software. ये सॉफ्टवेयर ही आपके पास. तो दिस इज TCP IP ही ये सारी चीजें क्या कर रहा होता है, अपने एंड के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है बच्चों. ठीक है, सो गुड क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आ गए हम लोग यहाँ पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल्स दैट आर रनिंग ऑन ईच लेयर. फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऊपर लास्ट सेशन में बताया था, देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स ऑन एप्लीकेशन लेयर. देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP, IMAP. IMAP क्यों लिख दिया मैंने? उप्स, IMAP. ठीक है, इंटरनेट मैसेज एड्रेसिंग प्रोटोकॉल. खैर, सो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे द फर्स्ट प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड द FTP. नाउ लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट प्रोटोकॉल वन बाय वन. वी नीड टू डिस्कस ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल. हमें सारे प्रोटोकॉल डिस्कस करने, बट आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द FTP स्टफ. सो FTP, एनीवन, कोई बच्चा फुल फॉर्म जानता हो अगर? The first protocol that we are working on, this is called FTP. Anyone, कोई बच्चा अगर full form जानता हो? I think many of you must be knowing the full form of FTP. Yes, I can see बहुत सारे आंसर्स आ गए मेरे पास. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अच्छा, देयर इज नॉट, मतलब एज सच कोई इसका यूज नहीं है, बड़ा सिंपल सा यूज है आपके पास. बट इसके अंदर जो टर्म्स होते हैं, यूज होते हैं इस प्रोटोकॉल के अंदर, जो वोकैबुलरी यूज होती है, बस वो आपको पता होनी चाहिए. खास काम नहीं, जैसे इसका आप लोग का नाम है वही इसका काम है. यूज्ड टू ट्रांसफर files slash media over internet. अच्छा, पोर्ट नंबर इज 21. अच्छा, पोर्ट क्या होता है आपके पास? पोर्ट इज एक्चुअली द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डेटा लीव योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर से जहां से डेटा निकलते हैं ना, दैट पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड द पोर्ट. अब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट इन योर कंप्यूटर. हर टाइप के लिए, हर टाइप ऑफ डेटा के लिए आपके पास क्या होता है? यू आर हैविंग अ डिफरेंट पोर्ट नंबर. लाइक द पोर्ट नंबर फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज 21. तो अब आप इस पोर्ट को ब्लॉक भी कर सकते हैं फॉर आउटगोइंग एंड फॉर इनकमिंग एज वेल. अगर आप इनकमिंग के लिए इसको ब्लॉक कर देंगे तो कोई भी फाइल आपके सिस्टम में नहीं आ सकती.
अगर आप इसको आउटगोइंग के लिए ब्लॉक कर देंगे तो कोई भी फाइल आपके सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती। सिमिलरली ईमेल का अलग पोर्ट होगा, मैसेज का अलग पोर्ट होगा, डाटा का अलग पोर्ट होगा। तो एवरीथिंग, देयर आर मोर देन 1000 ports that are available. If you want to connect to any server, the port number is different. If you want to connect to any journal client server model के साथ आपको connectivity develop करनी है, तो the port number is different. Like you have seen 8080 is the port number. आपने 8080 देखा होगा, कभी ऑब्जर्व करा होगा। तो हर चीज के लिए आपके पास क्या होगा, यू आर हैविंग अ डिफरेंट पोर्ट नंबर बच्चों, ठीक है। सो पोर्ट नंबर इज एक्चुअली द पॉइंट वेयर द डेटा लीव्स फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम, एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर आउटगोइंग, इट कैन बी डिफरेंट फॉर इनकमिंग। आप दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। Now let's move forward. After port number, you should know I told you that there are different terms that you should know. One of the term is called anonymous FTP. What we call it anonymous FTP. Now what is anonymous FTP? Anonymous FTP क्या होती है आपके पास? आप लोग इंटरनेट की दुनिया में गए, फॉर एग्जाम्पल कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं, इंटरनेट की दुनिया में जाता हूँ कहीं। मैं गया यहाँ पे, लेट्स से 9618 सिलेबस PDF। तो यू कैन सी, मैं कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे मैं डायरेक्ट पहुंचा और आई कैन डाउनलोड दिस, मैं ये सिलेबस जो कि मेरी फाइल है, आई कैन इजीली डाउनलोड दिस फाइल। मैं डायरेक्टली ये फाइल क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, विदाउट एनीथिंग, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अनोनिमस FTP। अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, कोई चीज आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं विदाउट the need of the authentication, without need of username, without need of any password, so such FTPs are called anonymous FTPs. So मैंने इसके बारे में आप लोगों को लिखवा दिया। डाउनलोडिंग फाइल्स from FTP server. FTP server is the server where the files are being kept without any authentication required. So if downloading the file does not require any authentication, such an FTP is called anonymous FTP. Okay. Now we are having one more word that is called FTP server. So what is FTP server? Of course, machine where files are placed. Okay. And further you are having one more thing, FTP commands. So FTP commands are actually the commands, yeah, instructions used for modification of files on FTP server. Example, if you want to rename a file, copy, delete, paste, whatever, जो भी आपको एक फाइल के साथ जर्नल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, so you can do that with the help of FTP commands. Further, you are having one more thing that you should know. This FTP, file transfer protocol, this model works on
client server model having two channels. One channel is called command channel and the other channel is called data channel. So when we talk about the command channel, इसके दो चैनल चल रहे होते हैं आपके पास. तो कमांड चैनल होता है और एक होता है आपके पास डाटा चैनल. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कमांड चैनल, तो कमांड चैनल दो चीजें कंट्रोल कर रहा होता है, ऑथेंटिकेशन इफ नीडेड एंड मॉडिफिकेशन. एंड डाटा चैनल just dealing with transfer of data. So that was all about the FTP file transfer protocol. And let me check if you have any questions till now. No, we are good. So let me give you a quick recap that what we have done in today's session. We have seen the functionality of the transport layer. We have seen the framework of the packet. That packet consists of checksum byte, destination IP, source IP, packet sequence number as well. Then we have seen the naming convention that is used in OSI model and TCP IP model. And I told you that examiner vice versa use कर रहा होता है, तो you should be prepared for that as well. ठीक है? TCP IP model के अंदर हम लोग क्या name use कर रहे होते हैं and what name we are using in OSI model, and vice versa भी आपका examiner कभी-कभार use कर सकता है, so you should know the naming convention as well. After that, we have seen the functionality of the internet layer. We have seen the functionality of the network access layer. We have seen one of the protocol that is called the file transfer protocol, and of course this protocol is running on the application layer. We have seen that whenever we want to transfer the files, we use this FTP protocol. Port number is actually the point where the data leaves from your system. जहां से आपका data leave करता है, that point is actually called the port number. So FTP का port number is 21. Then we talked about the anonymous FTP, files, FTP server, FTP commands, and it works on client server model having two channels, command channel and the data channel. So I think we are good. हमने यहाँ पे सारी चीजें कवर अप कर ली हैं आज, जो हमें आज के सेशन में कवर अप करनी थी. We don't have any questions till now, और you will be having your test. आप लोग का पहला टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा बच्चों ऑन फ्राइडे या सैटरडे. मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा. इट विल बी एन ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्विज होगा आप लोग का. सो मैं आप लोग को चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा अबाउट चैप्टर. आप लोग को बताया था दैट विल बी रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स का आप लोग का क्विज कंडक्ट करा जाएगा इन द कमिंग वीक, और आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड आप लोग को हाउ टू गिव द क्विज, किस तरह आप लोग क्विज कंडक्ट करवाया जाएगा, सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग को आज शाम तक इंशाल्लाह मैं ईमेल करवा दूंगा. ठीक है? सो आई थिंक वी आर गुड. तो आज को यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में तो आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क. क्विज कौन से डे पर होगा? सैटरडे आई थिंक अली जैन. I will be giving the test on Saturday. वो I will be talking to Sylvester. तो Sylvester जो भी हमें बताएंगे डेट, तो I will be giving the test on that particular date because that will be monitored. वो मॉनिटर भी किया जाएगा. आप लोग का हर चीज देखी जाती है उसके अंदर. तो जब भी टीम अवेलेबल होगी उनकी, तो I will be giving the test. So I think we are good. आज को ये तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. आप लोग का सेशन थोड़ा पहले खत्म हो गया बिकॉज इस सेक्शन में किसी ने ऐसा जितने जर्नल सवाल नहीं करे. ग्रुप 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, so that's why मैं इतना ही पढ़ा पाया था उन बच्चों को. सो आज यही तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.